Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, today we are going to discuss the topic regarding the software implementation. Previously, we discussed about software design in detail. The software design was distributed among two parts: software design part 1 and software design part 2. Software design part 1 was related to more of the general issues related to the software design and the link between the software analysis and the software design. But software and the second part was related to the software design, related to the design architecture. Today we are going to discuss about the issues related to the software implementation, the implementation model, the artifacts, the workers, and we're going to discuss some different licenses regarding the acquiring of the software, and how we are going to acquire the software as well, off the shelf for the development or costs, commercially off the shelf softwares, etc, etc. So bismillahirrahmanirrahim, let's start. So implementation transforms a design model into executable code. When we talk about the implementation, we talk more about the coding, because we already done the analysis and design phase. So implementation workflow implements the systems in terms of components such as source code, binaries, scripts, executables, etc. Source code means your programming file. Your binaries means your DLL, dynamic link libraries, or other binaries that are going to be linked together. Your scripts, like in some scripts will also be the part of predefined set of steps to perform. For example, when you perform a query in a database, maybe in the background their script is some sort of running, and there are executable files. In the end, when we deliver the file, that will be the executable file, because user will be clicking on the double clicking on the executable file for the running of the system. So the implementation is related to these source code, binary, scripts, executables, DLLs, packages, subsystems, interfaces, etc, etc. So we need to implement the design classes and subsystems found during design. Plan the system integration required in each iteration. Iteration means if the software is delivered in different iterations, and each iteration comprises of different packages or components, and eventually all the iterations will be combined together to build the system integrated software. Integrate design classes and subsystems by compiling them and linking them together into one more executables. Integrated design class, the programming classes, and subsystem may be include several design classes and packages by compiling them and linking them together into one or more executables. And linking them, as you see that in your C++ file, you write down the header files like studio.h or conio.h. So conio.h or studio.h, they are already available, the libraries that are linked when you execute your program or when you compile your program. So maybe in your final project may comprise of several subsystems that include several such header files and several such libraries that are compiled together and integrated together to form the executables. Distribute the executable components onto nodes into the deployment model. When we are done with the implementation part of it, we have to deploy those executables on the different nodes. When you talk about different nodes means the workstation or computers or PCs where this software is going to be run. Artifacts and workers. So artifacts, similarly to system analysis and design step, we have architect, system integrator, and component engineer. So architect is responsible for implementation model, deployment model, and architecture description. System integrator is responsible for integration build plan, how we are going to integrate the different components of the system. Component engineer is responsible for the development of the component, implementation, subsystem, and interfaces. We are going to discuss each of them in detail. So what is a component model? A physical replaceable part of the system that packages, implementation, and confirms
to and provide a set of interfaces. Standard component sets up include executables, a program that may be run on a node, जो को डबल क्लिक हम जहाँ से करें. फाइल होगी, फाइल कंटेनिंग अ सोर्स कोड. लाइब्रेरी हो सकती है स्टैटिक और डायनामिक लाइब्रेरी. अ टेबल जो कि डेटाबेस की टेबल हो सकती है, और डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है. सो इम्प्लीमेंटेशन फाइल कंटेन्स फाइल्स दैट इज कंप्राइज ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन क्लासेस जो कि हमने इम्प्लीमेंट कर चुके हैं. And design classes for over here implementation model like select courses resides select course manager, and this component like professor information resides professor info, database runtime professor info state, database persistent professor info state, and persistent professor info manager. So these implementation models, or you can say the different component model, may comprise of different design model. Over here a simple subsystem of professor.exe, when we click on this it will combine together database.dll, DLL state for dynamic link library, the professor information, employment list request, select courses, professor user interface, and course.dll. So course.dll may comprise of information regarding the courses, database.dll may comprise of all this information together and forming a subsystem. So this may be a single component, or this may be a single subsystem, depending on the scope and the scale of the software system that we are going to develop. If that system is huge, it may comprise of several subsystems, and subsystem may comprise of several components. If software is small, then we can say it's comprised of just simple components that are integrated together to form a software product. Class implementation goal is to implement a design class in a file component. Assign design classes to file components. Source code for design class that we have designed in previously. We need to generate the source code that reside in a file component. Consider scope on a file component which design classes to include. How we assign classes to file component will be determined by the facilities available in the programming language. कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह से उसमें वो जो है वो डिज़ाइन होती हैं सोर्स कोड डिज़ाइन क्लासेस के थ्रू. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी जनरेट द सोर्स कोड डायरेक्टली फ्रॉम अ डिज़ाइन क्लास. We did not see too much for detail of the UML class diagram. In class diagram we have different design classes, and from those design classes we generate the source code directly from those डिज़ाइन क्लासेस. फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्टोरेंट रोज़ या स्टार यूमेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर में, जब आप डिज़ाइन क्लासेस वगैरह डिज़ाइन करते हैं, क्लास डायग्राम वगैरह डिज़ाइन करते हैं, उसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं कौन सी लैंग्वेज होगी. C++ होगी, जावा होगी, सी होगी, C# होगी, एंड विद इन सिंगल क्लिक within the software you are going to generate the source code directly from the design. You do not need to implement the source code for it. So major task here is implementing methods for each operation. Need to choose a suitable algorithm and supporting data structures guided by flow of events, activity diagram, state chart diagrams. Also need to determine how to represent associations, aggregations, exact methods usably in the programming language. तो ये थोड़ी सी आपके लिए एक्टिविटी डायग्राम, स्टेट चार्ट डायग्राम थोड़ी सी आपको जो है वो इन चीज़ों का नहीं पता होगा. दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स राइट नाउ. तो I might send you a different file that may explain all of these diagrams together. ठीक है, but you will be learning about those diagram with practical information into the course of introduction to software development. तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, अदरवाइज मैं इसको भी करवा सकता था. Subsystem implementation. An implementation subsystem organizes the artifacts of the implementation model into more manageable pieces. कि subsystem के अंदर जो है ज़्यादातर ये जो मैंने अभी बात की कंपोनेंट्स जो है वो मोर मैनेजेबल कंडीशन हो सकते हैं. कैन कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, इंटरफेसेस एंड अदर सबसिस्टम. क्योंकि सबसिस्टम इज अ लॉजिकल कंपोनेंट, ये फिजिकल कंपोनेंट नहीं है. एक कंपोनेंट जो है एक पैकेज भी हो सकता है और एक कंपोनेंट खुद एक सबसिस्टम भी हो सकता है. तो एक लॉजिकल कंपोनेंट है, सिर्फ हमारी जो उसको ऑर्गेनाइजिंग तरीके से, एक डिस्ट्रीब्यूशन तरीके से हम उसको और आसान जो है बनाने के लिए कि मे बी वन आर मोर
then one components combine together to form a single subsystem, and one or more single subsystem combine together to form a complete software. So for subsystem need a package mechanism in the implementation environment. For example, package in Java, package in Visual Basic, directory of files in C++ project. तो आपको जो studio.h है, kuni.h है, पूरी की पूरी डायरेक्टरी फाइल्स उसके अंदर अवेलेबल है. आप कोई पैकेज क्रिएट करते हो जिसमें कंटेंट डिफरेंट क्लासेस और प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो विजुअल बेसिक के अंदर, जिसके अंदर जो डिफरेंट आप क्लासेस डिजाइन करते हो. सो दैट पैकेज और प्रोजेक्ट और डायरेक्टरी ऑफ फाइल्स मे बी become a component or may become a subsystem. As component and subsystem both are logical. तो जितना बड़ा होगा सॉफ्टवेयर तो वो आप फर्दर लॉजिकल डिकम्पोजिशन करते हुए जाओगे फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज. दे डोंट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस. पैकेज प्रोजेक्ट डायरेक्टरी ऑफ फाइल दे हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस. सो इनिशियली दिस विल बी द डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर. ये सब सिस्टम और जो कंपोनेंट है दे वोंट बी डिलीवर्ड, दे आर जस्ट अ लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा. System integration. Build the implementation of the part of the functionality of the system. Each build is version control. In a software house, जब भी एक वर्जन कंप्लीट होता है तो उसको बिल्ड कहा जाता है. भाई कौन सी बिल्ड है? ये 1.0 बिल्ड है. ये कौन सी बिल्ड है? 2.0. ये कौन सी बिल्ड है? 3.0. So बिल्ड का मतलब ये है कि it is a simple a version of the complete software or maybe the version of an iteration. Iteration means part of the software. Each life cycle iteration in the construction phase will result in at least one build and usually several. Maybe कि एक लाइफ साइकिल जो होगी जो कि सॉफ्टवेयर में कंटेन एक बिल्ड मतलब एक वर्जन और मे बी कंप्राइज ऑफ सेवरल बिल्ड्स. इंटीग्रेशन बिल्ड प्लान द सीक्वेंस ऑफ बिल्ड्स रिक्वायर्ड इन एन इटरेशन लिस्ट द यूज केसेस सिनेरियोज सब सिस्टम्स एंड कंपोनेंट रिक्वायर्ड. तो जो उसकी बिल्ड प्लान होगा इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, इटरेशन होगी किस हवाले से, कौन से यूज केसेस सिनेरियोज को इंप्लीमेंट किया जाएगा, कौन से सब सिस्टम्स होंगे which components will be part of it. This will be an initial release. You can say कि हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं. इनिशियल बिल्ड होगी. What is the step also a conceptual idea. A component with a skeletal or special purpose implementation used to develop or test another component that depends on the step. It is used for the testing environment rather it doesn't have any physical existence. ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता. Initial builds start from the lower layers and expand upwards and the sides of the layered subsystem hierarchy. So if you remember the layered architecture that we have discussed previously, तो वो lower level से start होता है. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वाली लेयर लाइब्रेरीज वगैरह बनाई जाती हैं, फिर इंटरफेस बनाया जाता है, फिर उसके जो यूजेज वगैरह बनाई जाती है, उसके पीछे डेटाबेस बनाया जाता है. तो वो लोअर लेवल से स्टार्ट होता है, देन इट गोज द अपवर्ड्स. Architecture implementation. So this is the system integration. अब system integration comprise several subsystems and components. Architecture is a much more global view of it that we discussed previously, more contextual view of it. So maybe in the architecture we have architecture, maybe we can say the system integration eventually yield the system architecture. Identify architecture significant components. सब सिस्टम जो इसके अंदर होंगे उनके इंटरफेसेस होंगे, कंपेयर ऑफ डिफरेंट डिपेंडेंसीज. You will trace one-to-one design subsystem not necessarily show in the implementation model. What will be the key components? Architecture significant design classes, executable components, components that are general, central or implement generic design mechanism. तो जो generic means that implements the functional requirements of the system. It map executable components onto nodes. Design one executable component per active class. Deploy component. Deploy means उसको production environment में उसको deploy करना. That implement active classes to the nodes on the which the active class resides. Focus on assigning physical component instance to node instance or components to nodes. Architecture information is related towards the deployment of the software to the nodes. जहाँ nodes का मतलब जिस PCs के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूटिबल कंपोनेंट्स होंगे वो रन होंगे डायरेक्टली, क्योंकि हम व्हेन वी आर गोइंग टू डिजाइन द सॉफ्टवेयर डिजाइन तो हम एक सिस्टम पे करें, लेकिन इवेंचुअली दैट विल बी रन ऑन अ डिफरेंट सिस्टम्स. implementation issues, reuse, configuration management and hard target development. Most modern software is constructed by reusing existing components or systems. When you are developing a software, you should make as much as
यूज एज पॉसिबल ऑफ द एग्जिस्टिंग कोड के रीयूज का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आप डेवलप करें सॉफ्टवेयर उससे रिलेटेड the components that you are going to be a part of that system, if they are already available, then you need to reuse those components rather than develop everything from the scratch. For example, Microsoft Windows का जो नया वर्जन आएगा तो Microsoft Windows they are not going to develop each and everything from the scratch. Previous Windows के वर्जन को वो उठाएंगे, उसके काफ़ी सारे जो है कंपोनेंट्स उठाएंगे, उसमें नए कंपोनेंट्स ऐड करेंगे, फिर नया विंडोज सॉफ्टवेयर जो है वो रिलीज हो जाएगा. Same for Microsoft Office. So every time when the Microsoft Office new version comes, doesn't mean they are going to develop a new software from scratch. No, they will use the existing Microsoft Office version, modify the existing Microsoft Office version, add new features, add new interfaces, new data structures, and then release that. So it will contain major reusable component. Configuration management. During the development process, you have to keep track of many different versions of each software component in a configuration management system. तो हर डेवलपमेंट फेज के अंदर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से आपको डिफरेंट वर्जन जो है वो रखना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल ये तो हो गया ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस, बट व्हाइल यू आर इम्प्लीमेंटिंग और डिप्लॉयिंग फेज, सो व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट, फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मीडिया प्लेयर स्टार्ट कर दो, आपसे पूछता है कि जेनेरिक या कस्टम स्टार्ट. तो जेनेरिक में क्या होता है, जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, कस्टम में आप उसको बताते हो कौन सी चीज़ें. इस इवन फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो आप फॉर इंस्टॉलेशन इट विल आस्क यू जेनेरिक और कस्टम. जेनेरिक मीन्स इट विल इंस्टॉल ऑल द एप्लीकेशंस. कस्टम मीन्स यू नीड टू चूज, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर रहे हो, पावरपॉइंट करो, लेकिन आप जो है वो बाकी सारे ना करो जो आपके इस्तेमाल नहीं है. होस्ट टारगेट डेवलपमेंट. प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर डज नॉट यूजुअली एग्जीक्यूट ऑन द सेम कंप्यूटर एज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. Rather, you develop it on one computer, the host system, and execute it on separate computer, the target system. तो वही जो मैंने अभी बात की कि प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर जो है does not going to be run on the same computer as the software development environment. Rather, it will be developed on one computer and on the host system, and executed on separate computer. And even for the development, you need to back up whatever the development that you have done today or weekly or whatever your schedule is. For example, I give you an example that when I started my first job in a software house, we were working on a Pfizer company, his development system. The client were residing in Dubai. A major software company was residing in Dubai, but it was outsourced to a Pakistani company. We were part of that company. उसमें क्या करते थे हम, डेली के डेली बेसिस पे जो भी हम डेटाबेस में अपडेट करते थे, जो भी जो है वो हम डेवलपमेंट करते थे, वो सारी के सारी जो अपडेट्स हैं, I used to upload that updates from the server in the Dubai. तो वो चीज़ अपडेट करते थे ताकि जो है वो उस चीज़ में वहाँ पे बैकअप रहे, स्टोर रहे, जो ठीक है, जो कि जहाँ पे टारगेट है, जहाँ पे वो चीज़ इस्तेमाल होगी. लेकिन अभी वो इस्तेमाल वाले यूज़ वाले फेज में वो नहीं होगा. rather than that was for the backup purposes, but eventually the target host will be in the Dubai where the system will be eventually used. Build or buy. In a wide range of domains, it is now possible to buy off the shelf systems that can be adopted and tailored to the user's requirements. Off the shelf system may be that systems that are already available in the market. We just need to go and buy them. For example, if you want to implement a medical record system, that you can buy a package that is already used in hospitals. It can be cheaper and faster to use the approach rather than developing a system in a conventional programming language. It is better that we go and buy that software that is already in the market rather than developing our own software. As I gave you an example previously, like point of sale system. So point of sale system, there are several point of sale systems that are available in Pakistani market that are being used by the several supermarkets. So if you want to start your own supermarket, then you do not need to build the software by yourself, rather than go and buy the software which is more already being used in the market, which is more cheaper, faster, that already have gone through different tests. You just need to configure that, configure that according to your own requirements. When you develop an application in this way, the design process becomes concerned in how to use the configuration feature of the system to deliver the system requirements. कि जब आप डेवलप करते हो सिस्टम में, तो आपका डिज़ाइन प्रोसेस कंसर्न हो जाता है कि भाई किस तरह से आप कन्फ्यूजन फीचर्स जो है सिस्टम को डिलीवर कर पाएंगे. From the 1960s to 1990s, the most new software was developed from scratch.
by writing all code in a higher level programming language. The only significant reuse of software you as the reuse of functions and objects in a programming language library, because at that time there weren't many software products available. So in those era, all the software are being developed by from the scratch. The only thing that software engineers were able to reuse, that was the objects and the different functions available in the programming languages libraries that you use. जिस तरह कि आप studio.h या Gnu.h इस्तेमाल करते हो. Cost and schedule pressure mean that this approach become increasingly unviable, especially for commercial and internet-based systems. An approach development based around the reuse of existing software emerged, and is how it is now generally used for business and scientific software. तो शुरू से सारी की चीज़ें डेवलप करना, स्पेशली फॉर कमर्शियल इंटरनेट बेस्ड सिस्टम्स, इनके अनवायबल हो जाते हैं, क्योंकि अब हर चीज़ जल्दी होगी, कंपटीशन हो गया मार्केट के अंदर. वी नीड टू डिलीवर द सॉफ्टवेयर, स्टार्ट यूजिंग इट as early as possible. So it is better to go for the development approach that includes the reuse of existing software for business scientific software, rather than that is developing from the scratch. So reuse levels, what are the reuse levels? Abstraction level, at this level you don't reuse software directly, but use knowledge of successful abstraction in the design of your software. Abstraction level, abstract जिस तरह कहा जाता है, without the dependent of the technicalities. rather than कि आप एक सॉफ्टवेयर का जो है वो बना सॉफ्टवेयर यूज़ करा, उसका जो SRS डॉक्यूमेंट है, उसके जो डिज़ाइन क्लासेस हैं, आप जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो डिज़ाइंस हैं, वो आप एक सॉफ्टवेयर की इस्तेमाल करके जो है आप उसको रीयूज़ करके उसमें नई चीज़ें ऐड करके आप दोबारा से नया सॉफ्टवेयर बना सकते हो. एट दिस लेवल यू डायरेक्टली रीयूज़ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट लेवल रीयूज़ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी रादर देन द राइटिंग द कोड योरसेल्फ, जिस तरह यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आपको दिया हुआ है. देन बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स, यू डोंट नीड टू क्रिएट द टेक्स्ट बॉक्सेस एंड बटन्स बाय राइटिंग अ कोड, just need to drag and drop and it will be incorporated. The component level, components are collections of objects and object classes that will you reuse in application systems. For example, your tabs जो आपके पास available हैं, या ऐसे business applications के हवाले से जो ऐसे component, for example weather है, वेदर के वाले से आपके कंपोनेंट सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट, तो आप वो ऑलरेडी डेवलप किया वो वेदर कंपोनेंट आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. आपका जो करेंसी एक्सचेंज है, जो कि लाइवली आपको करेंसी एक्सचेंज कर सकता है, तो ऐसा कंपोनेंट जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, यू कैन इनकॉर्पोरेट दैट कंपोनेंट इनटू योर सिस्टम. ऐसे सेवरल कंपोनेंट्स आपके हो सकते हैं जो कि आप ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल हैं, जो कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके CMS हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, वर्डप्रेस वगैरह में, तो वर्डप्रेस when you are going to install WordPress, so it comes with several different extensions and components, जो कि आप some of them are free to use, some of them you have to buy them. rather than कि आप अपना वेदर का, अपना करेंसी खुद कंपोनेंट आप डिज़ाइन करो, उठा के आप इस्तेमाल कर लें, इनकॉर्पोरेट कर लें. एट दिस लेवल यू रीयूज एंटायर एप्लीकेशन सिस्टम. सिस्टम लेवल में क्या था, यू रीयूज एंटायर एप्लीकेशन सिस्टम, पूरे का पूरा आप रीयूज कर सकते हो. तो सॉफ्टवेयर यूज के अंदर सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम, कॉस्ट जिसको कहा जाता है, या कमर्शियली ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट फ्रेमवर्क्स हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइब्रेरीज हैं, आपके आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन पैटर्न्स हैं. रीयूज कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ द टाइम स्पेंट इन लुकिंग फॉर अ सॉफ्टवेयर टू रीयूज एंड असेसिंग वेदर और नॉट इट मीट्स योर नीड्स. ऑफ कोर्स यू हैव टू सर्च फॉर द सॉफ्टवेयर दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल. यू नीड टू पे देम, the people who are going to search for and looking for the software. So of course it will increase the cost for reusing and accessing the whether it is meets your needs. ऐसा नहीं कि आप reuse के लिए सॉफ्टवेयर एक दो ढूंढ के दो आएँ, लेकिन वो आपके जो है वो काम के ना हो, इवेंचुअली आपको खुद डेवलप करना पड़े. जो कॉस्ट लगी, जो टाइम स्पेंड हुआ, तो वो आपका वेस्ट हो गया. Where applicable, the cost of buying the reusable software for the large off-the-shelf system, these costs can be very high. Where applicable मीन्स बाइंग रीयूजेबल सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत बड़े ऑफ द शेल्फ सिस्टम से आपको जो है बाय करने के लिए कॉस्ट ज़्यादा महंगी भी पड़ सकती है. फॉर एग्जांपल ERP सिस्टम से आपके सीमेंस वगैरह के, जो कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए के सॉफ्टवेयर हैं, जो कि आप जो है बाय करते हो ERP सिस्टम. सो मे बी दे आर वेरी मच कॉस्टली टू बाइंग दोस ऑफ द शेल्फ सिस्टम बिकॉज दे ऑलरेडी डेवलप्ड एंड दे आर लार्ज. The cost of adapting and configuring the usable software component of system to reflect the requirements of the system that you are developing. उस सिस्टम को अडेप्ट करना, कन्फिगर करना अपने एनवायरनमेंट के हवाले से, टू रिफ्लेक्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर सिस्टम डेवलपिंग, इट विल आल्सो इंक्रीज द कॉस्ट. द कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग रीयूजेबल सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स विद ईच अदर इफ यू आर यूजिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड विद द न्यू कोड दैट यू हैव टू डेवलप.
maybe the different components that you are going to buy them and incorporate them with your own developed code, the cost of integration of reusable software will also increase. जिस तरह के मैंने लेट मी गिव एन एग्जांपल कि व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, तो मास्टर्स के लिए मुझे जो है कुछ कोड लिखना था जावा के अंदर, उसमें जो है लॉजिक प्रोग्रामिंग कर दी थी। लॉजिक प्रोग्रामिंग जावा में नहीं होती, इस वाई आई हैड टू यूज अ प्रोलॉग। तो प्रोलॉग मैंने इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन जावा और प्रोलॉग को इंटीग्रेट करने में जो है वो मसला था, क्योंकि आई हैड टू क्यूरी सेंड अ क्यूरी फ्रॉम जावा टू प्रोलॉग, और प्रोलॉग से मुझे आउटपुट वापस जो है जावा के अंदर इनकॉर्पोरेट करना था और फिर जावा के अंदर रिजल्ट कैलकुलेट करने थे। लेकिन जावा प्रोलॉग के अंदर इंटरफेस अवेलेबल नहीं है, तो और मुझे 2 से 3 महीने लगे एक प्रॉपर इंटरफेस ढूंढने में जावा प्रोलॉग के अंदर। तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। सो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आफ्टर द रीयूज, विल टॉक अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। Configuration management is the name given to the general process of managing a changing software system. Name given to the general process of managing a changing software system, कि हम सिस्टम बाय करें, उसको कॉन्फ़िगर करें अपने हिसाब से। The aim of configuration management is to support the system integration process so that all the developers can access the project code and documents in a controlled way, find out what changes have been made, and compile and link components to create a system. तो कॉन्फ़िगर करने में क्या होता है कि सारी चीज़ें कंबाइन करते हैं, टुगेदर करके एक कॉन्फ़िगर करते हैं, ताकि इवेंचुअली हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो काम करने में इस्तेमाल है। अच्छा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज रिगार्डिंग द डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस रादर देन द डिप्लॉयमेंट। तो दोनों में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होती है, डिप्लॉयमेंट में भी होती है, इम्प्लीमेंटेशन में भी होती है, कि सारे जो है कंपोनेंट्स एंड सब सिस्टम दैट आर डेवलप्ड बाय डिफरेंट टीम्स मे बी इन अ लार्ज सिस्टम दैट आर configured together to form create a complete system. Different activities regarding the configuration management, version management, where support is provided to keep track of the different version of the software components. हर configuration का एक version manage करना पड़ता है। Version management system include facilities to coordinate development of several programs, क्योंकि end of like in agile development scrum के अंदर for after 1 month और 2 month आपका जब sprint complete होता है तो एक version आपका रिलीज होता है। हर स्प्रिंट के बाद एक नया वर्जन रिलीज होता है, तो उसको हर वर्जन को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। सिस्टम इंटीग्रेशन, वेयर सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू हेल्प डेवलपर्स और डिफाइन व्हाट वर्जन ऑफ कंपोनेंट आर यूज्ड टू क्रिएट ईच वर्जन ऑफ द सिस्टम। दिस डिस्क्रिप्शन इज देन यूज्ड टू बिल्ड अ सिस्टम ऑटोमेटिकली बाय कंपाइलिंग एंड लिंकिंग एंड रिक्वायरिंग कंपोनेंट। सिस्टम इंटीग्रेशन को पता, सिस्टम इंटीग्रेशन में आपको जो है वो हेल्प कर सकते हैं कि डेवलपर कौन से कंपोनेंट्स के कौन से वर्जन में जो है वो क्रिएट किए गए हैं, ताकि आप व्हेनेवर यू वांट टू यूज अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट वर्जन से आप उठा के जो ऑटोमेटिकली लिंक और कंपाइल कर दें। प्रॉब्लम ट्रैकिंग, वेयर सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू अलाउ यूजर्स टू रिपोर्ट बग्स एंड अदर प्रॉब्लम्स एंड टू अलाउ ऑल डेवलपर्स टू सी हु इज वर्किंग ऑन दीज प्रॉब्लम्स एंड व्हेन दे आर फिक्स्ड। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल इंटीग्रेशन, आपके पास कंपोनेंट वर्जन होगा, सिस्टम बिल्डिंग होगी, वर्जन मैनेजमेंट होगा, सिस्टम वर्जन होगा, देन यू गो टू द चेंज मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड सम प्रपोजल्स रिगार्डिंग चेंज इफ देयर आर प्रपोजल्स, release management, and finally the system release. This is the configuration management tool interaction. Host target development, most software is developed on one computer, the host, but runs on separate machines are targets. More generally we can talk about a development platform and an executable platform. तो development आप अपने system पे करते हो, वो executable platform आपके जो है वो client के system होता है। A platform is more than just a hardware, it includes the installed operating system. इट डज नॉट इंक्लूड ओनली हार्डवेयर, वो हार्डवेयर सिर्फ नहीं होता, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, अदर सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होंगे सच एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, आपके डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स होंगे, जिस तरह आपके पास ओरेकल है, माइस्क्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स होंगे आपकी जो विजुअल स्टूडियो, जावा एक्सेट्रा, एंड इंटीग्रेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडी जिसको कहा जाता है कि आपके विजुअल स्टूडियो की आईडी, जावा की आईडी, जो नेटबीन्स वगैरह या कोई और किस्म की जो है वो आईडी आप यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको इंस्टॉलेशन करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू डिप्लॉय दैट सिस्टम। क्योंकि विजुअल स्टूडियो जावा के अंदर जो लाइब्रेरीज आपने यूज़ की हैं, if you are not going to deploy the system, you won't be able to use that system and compile that system at the end of the client. Development platform usually has different installed software that execution platform. This platform may have different architecture. Different development platform के अंदर several softwares हो सकते हैं, and these platforms may be have a different architectures.
होस्ट टारगेट डेवलपमेंट, आपके होस्ट के अंदर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म होगा, आईडीई कंपाइलर्स होंगे, टेस्टिंग टूल्स होंगे, और टारगेट के अंदर एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म होगा, लाइब्रेरीज होंगे, रिलेटेड सिस्टम्स होंगे, और आपके पास डेटाबेसेस होंगे। Development platform tools, an integrated compiler and syntax directed editing system that allows you to create data and compile code. Development platform tools आपका C++ की जो टर्बो आप इस्तेमाल करते हो, नेटबीन्स इस्तेमाल करते हो, उसकी जो आईडी होती है जिसके अंदर सिंटैक्स कोड राइट करते हो, उसको कहा जाता है डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। लैंग्वेज डीबगिंग सिस्टम हो सकता है, ग्राफिकल एडिटिंग टूल्स हो सकता है सच एज टूल्स एडिट यूएमएल मॉडल्स, टेस्टिंग टूल्स सच एज जे यूनिट, आपका जो है जावा यूनिट टेस्टिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है, दैट कैन ऑटोमेटिकली रन अ सेट ऑफ टेस्ट इन अ न्यू वर्जन ऑफ प्रोग्राम। विल टॉक अबाउट द यूनिट टेस्टिंग in the coming lecture. Project support tools that help you organize the code for different development projects, for Microsoft project जो कि मैंने आपको assignment भी जो है वो that I gave you. IDEs होती हैं, integrated development environment. Software development tools are often grouped to create an integrated development environment. आपकी जो Visual Studio की जो IDE है उसको कहा जाता है integrated development environment. And IDE is a set of software tools that support different aspects of software development within some common framework and user interface. IDEs are created to support development in a specific programming language such as Java. Java के IDE आपके पास NetBeans available है, Eclipse है. The language IDE may be developed specifically or may be an instantiation of general purpose IDE. Eclipse आपकी general purpose IDE ही है जिसके अंदर आप CP में भी काम कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, पाइथन में भी काम कर सकते हो, जावा भी काम कर सकते हो, C# पे भी काम कर सकते हो, आई होप। एंड विथ स्पेसिफिक लैंग्वेज सपोर्ट टूल्स के जो डिफरेंट कंपाइलर्स होंगे वो उस IDE का हिस्सा होंगे जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हो। Component system development factors. If a component designed for a specific hardware architecture or relies on software or other system, it must obviously be developed on a platform that provides the required hardware and software. High availability systems may require components to be deployed on more than one platform. If there is high level communication traffic between components, it usually makes sense to deploy them on the same platform. Towards ये theory है. These are some issues regarding the open source development. आपके open source development क्या आ जाता है कि जब आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हो, डेवलप करते हो, फ्रीली लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए डाल देते हो ताकि वो इस्तेमाल भी करें और उसमें फर्दर अपने जो इफ़ दे वांट बी पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट टीम तो उसमें डेवलपमेंट भी करें। फॉर एग्जाम्पल ओपन सोर्स डेवलपमेंट इज एन अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन विच द सोर्स कोड ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज पब्लिश्ड, जो सोर्स कोड पब्लिश किया जाएगा एंड वॉलंटियर्स आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल जावा का सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल है, MySQL का सोर्स कोड अवेलेबल है, so maybe participant from different countries, they may be the participant in the part of the development process. Its roots are in the Free Software Foundation, which advocates that source code should not be proprietary but rather should always be available for users to examine and notify as they wish. These are anonymous groups हैं, वो कहते हैं कि फ्री करो चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट जो हाइड करती है, इस तरह से जो है वो आपका ये भी है कि जो प्रॉपर्टी आइटम से कंपनी जो लाखों रुपए चार्ज करते हैं, ओपन सोर्स वाले कहते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करूँ उसको फ्री रखो ताकि लोग इस्तेमाल करें, उसको एप्लीकेशन डेवलप करें। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक्सटेंडेड दिस आइडिया बाय यूजिंग द इंटरनेट टू रिक्रूट अ मच लार्जर पॉपुलेशन ऑफ वॉलंटियर डेवलपर्स, मेनी ऑफ देम आर आल्सो यूजर ऑफ द कोड। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कम्युनिटी जो है उन्होंने कहा कि इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सारी पॉपुलेशन जो फ्रीली वॉलंटियर डेवलपर्स हैं उनको हायर करें, जिनको पैसे नहीं मिलेंगे, दे विल बी द वॉलंटियर्स, जो कि इवेंचुअली वो उसको इस्तेमाल डेवलप भी करेंगे, उसको इस्तेमाल भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा फीचर दे वांट टू थिंक दैट दिस शुड बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, जो उनको रिक्वायरमेंट है तो वो उस फीचर को डेवलप करके उसका हिस्सा बना देंगे और फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। द बेस्ट नॉन ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स इज ऑफ कोर्स द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स है जो कि आप फ्रीली डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि विंडोज़ जो वो प्रोप्राइटरी आइटम से आपको पे करना पड़ता है, लेकिन लिनक्स आपका फ्री आप डाउनलोड कर इस्तेमाल करें, विच इज़ वाइडली यूज एज सर्वर सिस्टम एंड इंक्रीजिंग एज अ डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। अदर इंपॉर्टेंट ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स आर जावा भी फ्री है, द अपाची वेब सर्वर एंड द MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो भी फ्री है, ओपन सोर्स हैं जो कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ऑफकोर्स लिनक्स के जो डिफरेंट वर्जन है डिफरेंट कंपनीज निकालते हैं उसमें मुख्तलिफ आपके पास टूल्स हैं जो कि दे डेवलप, सो दैट वर्जन ऑफ इट दे में चार्ज ओवर इट। बाकी जो बेसिक वर्जन है वो प्रोवाइड कर देंगे, वो फ्री है जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हो।
जावा लैंग्वेज इज़ फ्री, आप इस्तेमाल कर सकते हो, कमर्शियली डेवलप भी कर सकते हो एप्लीकेशंस. MySQL यू कैन यूज दैट MySQL and develop the commercial applications over it. Open source business, more and more product companies are using an open source approach to development. Their business model is not reliant on selling a software product but on selling support of the product. एक नया बिजनेस मॉडल जिसको कहा जाता है ओपन सोर्स बिजनेस. ओपन सोर्स बिजनेस में कहा जाता है कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देंगे, लेकिन उसकी जो सपोर्ट है फॉर सेलिंग सॉफ्टवेयर उस पर से जो है पैसे कमाएंगे. तो ये भी एक बिजनेस मॉडल जो बहुत सक्सेसफुल है. दे बिलीव दैट इन्वॉल्विंग द ओपन सोर्स कम्युनिटी विल अलाउ सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप मोर चीपली, मोर क्विकली एंड विल क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ यूजर्स फॉर द सॉफ्टवेयर. CMS के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर जो है आप उसकी इंस्टॉल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उस वर्डप्रेस में काफ़ी सारी एक्सटेंशंस हैं जो है या उसकी सपोर्ट है, उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं. ठीक है. Open source licensing. A fundamental principle of open source development is that source code should be freely available. तो fundamental principle open source का है कि आपका source code freely available हो. This does not mean that anyone can do as they wish with it. It doesn't give you a right to do whatever you want to do with the source code. Legally जो developer होगा उस code का जो होगा either company या the individual उस code का जो है वो own करेगा, लेकिन प्लेस रिस्ट्रिक्शंस कि आप रिस्ट्रिक्शन प्लेस कर सकते हैं किस तरह से जो है वो आप इसको सोर्स कोड को लीगली इस्तेमाल कर सकते हो. फॉर एग्जांपल जावा है तो जावा का जो सोर्स कोड है वो ओपन है, लेकिन जावा इज प्रॉपर्टी आइटम ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन. करंटली देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन एंड्रॉयड गूगल एंड ओरेकल के. वो क्या कहते हैं कि भाई एंड्रॉयड का कहा जाता है कि एंड्रॉयड ने जावा लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करके जो है वो डेवलप किया गया है. और एंड्रॉयड इज पार्ट ऑफ द मेनी कमर्शियल प्रोडक्ट्स आपके जो मोबाइल्स पे चल रहा है. तो ओरेकल वालों ने कहा कि ये जो एंड्रॉयड है वो उन्होंने जावा पे लाइब्रेरीज जो है वो इस्तेमाल की हैं उसको एंड्रॉयड के डेवलपमेंट के अंदर, तो उसका जो है वो लीगली तौर से ठीक नहीं है और हमें इसके पैसे पे करें प्रॉपर्टी आइटम्स के हवाले से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा सकते हैं इसके ऊपर. सम ओपन सोर्स डेवलपर बिलीव दैट इफ एन ओपन सोर्स कंपोनेंट इज यूज्ड टू डेवलप अ न्यू सिस्टम देन दैट सिस्टम शुड बी ऑन ओपन सोर्स. कुछ लोग कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स हम डेवलप करें तो उसको भी ओपन सोर्स होना चाहिए, जो कि नहीं है. आप MySQL जावा पे डेवलप करके आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है या वेब एप्लीकेशन है, आप उसको सेल करते हो. तो कुछ लोग कहते हैं कि आप ओपन सोर्स पे बनाओ तो उसको सेल भी ना करो, उसको भी फ्री में दो. अदर्स आर विलिंग टू अलाउ देयर कोड टू बी यूज्ड विदाउट दिस रिस्ट्रिक्शन. द डेवलप द सिस्टम मे बी प्रॉपर्टी एंड सोल्ड एज अ क्लोजर सोर्स सिस्टम. कुछ और कहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएं, आप डेवलप करें लेकिन उसको प्रॉपर्टी आइटम के तौर पे और उसको सेल करें, जिस तरह से आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, दैट यू सेल दैट. देयर आर डिफरेंट लाइसेंस मॉडल. आपके जनरल पब्लिक GNU लाइसेंस कहा जाता है. दिस इज सो कॉल्ड रेसिप्रोकल लाइसेंस. दैट मीन्स दैट इफ यू यूज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दैट इज लाइसेंस अंडर द GP लाइसेंस देन यू मस्ट मेक दैट सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स. कि अगर आपने जो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स यूज़ किया है तो आपको अपना सॉफ्टवेयर डेवलप जो किया है वो भी आपको फ्रीली ओपन सोर्स ही रखना है. GNU लेसेस जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर आप वो आप लेते हो इज अ वेरिएंट ऑफ द GPU वेयर यू कैन राइट कंपोनेंट दैट लिंक द ओपन सोर्स कोड विदाउट हैविंग टू पब्लिश द सोर्स ऑफ दिस कंपोनेंट्स. कि आप डेवलप करें उसको इस्तेमाल करते हुए, लेकिन आप खुद अपने कंपोनेंट जो आपने डेवलप किया उसका सोर्स कोड जो है आप ओपन ना रखें. बक लिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जिसके अंडर में दिस इज नॉन रेसिप्रोकल लाइसेंस व्हिच मींस यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू republish any changes or modifications made to the open source code. You can include the code into property system that you are sold. Means आपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड उठाया, उसमें अपनी चीज़ें चेंज की और उसके ऊपर आपने जो प्रॉपर्टी सिस्टम डेवलप किया आपने वो चीज़ सेल कर दी. जो आपने चीज़ें चेंज की उसको भी आप हाइड कर सकते हो, उसको भी आप जो रख सकते हो अपने पास. So these are the different open source license. We'll be discussing more about the shareware license, single user license, multi-user license in the follow-up of the lecture. So this is the end of our today's lecture. Hope that it is today's lecture थोड़ा सा dry था, थोड़ा सा complicated था. Hope that it is not very much difficult to understand for you. We'll discuss this today's lecture more about it. If you have any question answer in the question answer session in the coming week, inshallah. Okay guys, so thank you, take care and Allah Hafiz.